please. Okay, Ahana, I think we can start now. Yeah, okay. Hello, everyone. A warm welcome to each one of you on behalf of Sarkari School and Project Vedna. It is indeed an honor and pleasure to have you all here today as we gather to host today's event, Policy Discussion. My name is Ahana, and I am the co-lead of Project Vedna. I am currently pursuing political science, and I'm in my second year at Ashoka University. Together, we will embark on a journey of knowledge, empathy, and empowerment as we explore the vital aspects of menstrual health and hygiene. Let us create an open and supportive space where we can learn, share, and grow. Now, on to Reva, the lead of Project Vedna. Thank you, Ahana. As Ahana mentioned, I am Reva Srivastav and I am the project lead of Project Vedna. I am currently in my third year and I am pursuing BSc Economics from Gokhale Institute of Politics and Economics. First, I would like to introduce Sarkari School. So, Sarkari School is an initiative of We Citizens Foundation, which is devoted to creating a bright future for the students of India, especially from marginalized communities. There exists today a shadow of stereotypes around government schools and their impact, which is a poor narrative that overlooks their successes and focuses solely on their inadequacies. So, Sarkari School aims to shift this narrative by equipping the readers with facts and stories of resounding success and hope. Now, I would like to introduce you all to Project Vedna. So, Project Vedna is an initiative under Sarkari School. So basically, it is about the fact that every year around 23 million girls have to drop out of school because of menstruation. This happens because they face embarrassment while attending schools, and also when they have pain, they don't know how to handle it because this is a topic which is not very talked about in schools and in families. So they tend to drop out from schools. So to tackle these staggering numbers, Project Vedna aims towards creating awareness campaigns to reduce school absenteeism or dropouts in girls after menstruation in rural areas through active involvement of youth and creating conversation around normalizing the taboos and stereotypes around periods. We make use of social media platforms to organize interviews, slogan writing competitions, and open mic competitions around this topic to encourage more public participation. Now, I would like to hand over to Arpita, who is the event coordinator for today's policy discussion. Good morning, everyone. As Reva said, I am Arpita Shekhawat, coordinator of this event. So, what is menstrual health and hygiene policy? It is a well-known fact that people in India lack the knowledge regarding menstrual health and hygiene. The menstrual health sector has tremendous scope for improvement. When I was in school, it wasn't a surprise to see girls having menstrual health problems. Most of those problems could have easily been avoided had they been made aware about the changes their bodies were going through. So, to ensure that girls receive proper menstrual health and hygiene at school, the Ministry of Human Resource Development has developed the Menstrual Hygiene Management and Schools Policy. This policy provides both students and teachers with guidance on menstrual health and hygiene. There was this one time when we held a gift a pad campaign in a school. There were so many girls that never had a workshop about menstruation hygiene. They had so many questions about it, and then there were girls who were so hesitant to even talk about it or even listen to it. Girls were having second thoughts in accepting the pads that we were giving them. But after the workshop, we all felt that they got a bit comfortable about it, and at least they could talk about their periods. So, regularly organizing special menstrual health seminars for adolescent and pre-adolescent girls would be a great step that schools and NGOs can take. A few of these seminars should also be made mandatory for the parents to attend. Today, at this event, we have invited school students, college students, and school teachers to share their valuable insights and experiences and to contribute to shaping menstrual policies and making a positive change in schools because nobody knows better than you people about this topic. Thank you so much. Over to Kunjan now. Hello, I'm also one of the co-hosts and an intern here at Sarkari School.
So, firstly, welcome to all of you. And I would like to invite the guest speakers. So, firstly, we have from college students, we have Mathili Kotwal. Then we have Lubna Rashid. Then we have Hiteshir Bhatt, Harbir Kaur, Pranjul Sharma, Sakshi Agarwal, Somik Bhakt, Santosh Suresh Hambad, Jayashri. From school students, we have Tanvi Khosla, Vishwajit Kaur Bali. And teachers, from teachers, we have Rajrani Sharma, Maya Singh, and Chavi Agarwal. Hi. Okay. So let me give a brief about today's event. Today's event is in many ways a groundbreaking initiative that is aimed at addressing the critical need for menstrual health education and support among young individuals. By implementing policies suggested by today's speakers, we strive to empower young individuals to break the silence surrounding menstruation and ensure a supportive environment for all students. Additionally, today's event is also a symposium that brings together educators, health professionals, policymakers, and students to discuss and strategize the effective implementations of this crucial policy. This program is designed to educate participants about the importance of menstrual health and hygiene, promote inclusivity, dispel myths and taboos, and explore sustainable solutions to tackle the challenges faced by menstruating individuals. With this, I'd like to call upon our first participant, Labna Rashid, who is a law student at Sopore Law School, University of Kashmir. Currently, she is pursuing a BA LLB and she aspires to become an advocate. Labna, I request you to come on screen right now. Thank you. Labna, can you hear us? Are we audible? Hello? Okay, should we move on to the next participant for now? Okay, Labna is here. Hello, Labna. If you're speaking, okay. Let's move on to the next participant for now. Next, I'd like to invite Somik Bhagat. Somik lives in Kolkata and he is currently pursuing a BBA at Usha Martin University through Sunstone. On to you, Somik. Thank you. Yeah, good morning, ma'am. Thank you, ma'am, giving me this opportunity to participate. And I'm very glad, ma'am. Menstrual health education, ma'am, ensure that all students receive an age-appropriate information about menstruation and biological process, hygiene and practice, and emotional well-being, ma'am. That and proper sanitation infrastructure, then improve, ma'am, health hygiene in sarkari school, clean water and sanitation facilities. That's over, ma'am. Okay, thank you, Somik. Moving on, I'd like to invite Pranjal Sharma.
Pranjal Sharma is a master degree holder from the Department of Environmental Sciences at Bareilly College, Uttar Pradesh. Pranjal? Yeah, very Hello. good morning. Am I audible to you? Yes, you are. Okay. Will it be okay like if I don't turn my camera on? Because Prefer, I'm sick. but I'm okay. I'm sick. I'm in fever since last night. That's why I can't. I'm just resting in my bed. But yeah, I can speak. I can try to speak. Okay. Will it be good? Cool. That works. Thank you. So give me a sec. Uh, so here I go. Like menstruation is a major psychological changes in a woman's life, but the problem here is the lack of the knowledge and the awareness, also the poor practices and the socio-culture barriers across the rural and somewhere in urban areas as well, is creating the consequences which are disturbing the health of a woman. Also, they are very unsatisfactory because due to the myths and the lack of the awareness, menstruation is considering something like which is very unclean in our Indian society, especially. I also remember when I was a child, I was the youngest child among my classmates, and the girls, we have a girl group of, I guess, 28, and they were elder to me, they attained their puberty earlier than me, and no one ever told me about about this thing, like what menstruation is, or whenever they used to discuss in like between them, and I reach at the position or at the place, they just suddenly stop themselves for speaking something. And I was like, why? But like, what they were speaking about, why they are not sharing it with me? I was very curious about that over the time. One day, when I attained my puberty, I was very unaware about that, because whenever I asked my mom about this, my mom always used to told me like, I don't know what you are talking about, because she also have this means misconception in her mind. Like, if I told her earlier, in her early age, she will attain it earlier. So she never told me about that, and that was, I still remember, that was very um like un I don't know, I don't have any idea in my like that uh time. I don't have any idea how should I manage it or how shouldn't I manage it. I still remember that was my dance practice over that day, and when I told one of my teacher, I did attain that in my school, and I asked my teacher about it. Then she told me, okay, now you can't do a dance practice anymore. And then I asked her why. Then she told me, you will face some problems. So I have seen all such problems in my life among peoples in which I grew up. So I can understand this thing, and I feel like that was a very bad thing which was going over that time. Anyways, I would like to only say, like, beyond these misconceptions, there should be a real need or to spread the awareness that menstruation is as old as humanity is, right? So one should spread awareness and should make girls this confidence that okay, it is not a so severe uh, problem, or it is not a curse. You can handle it. And also, one should give them the time relax over the time, to have some. Okay, that's much I can speak. I'm sorry about it. No more, nothing more to speak. I hope someone else will cover it. I'm so sorry about it. Thank you so much, Pranjal. Yeah, okay, Next, thank we would you. like to Next we would like to call Santosh Suresh Ambar, who is from Maharashtra and is pursuing BBA from Vishweshwarai Group of Institutions, and he aims to become a motivational speaker. Hello, am I audible, ma'am? Hello, Yes, you're hello. audible. Okay. First of all, thank you so much, ma'am.
giving this opportunity. मैम क्या मैं हिंदी में यूज कर सकता हूँ लैंग्वेज? Sorry, your voice isn't clear. Can you be a little louder? मैम क्या मैं प्रेफर हिंदी लैंग्वेज? Yes, 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 sure. ओके, 1 minute. यस, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी। लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, सिचुएशंस होती है, बहुत सारे क्रिटिकल प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं, बट सबसे बड़ी एक प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है जस्ट वुमेन्स के लिए, वो है मेंस्ट्रुअल हाइजीन। तो वो बहुत बहुत हमें हेल्पफुल करती है, एक लेडीज को हेल्पफुल करती है पीरियड्स के टाइम पर। बट हमें वो आज की कंडीशन में हमें लगता है कि अब छोटे छोटे बच्चों को हम जब बताते हैं कि जो हमारे बॉडी में वेस्ट पार्ट है वो बाहर निकल रहा है, यही थॉट प्रोसेस हम एक वुमेन को, हम एक गर्ल्स को, हम एक छोटे बच्चों को बताते हैं, यही सेंटेंस सबसे पहला हमारा गलत है। क्योंकि जब हम इस चीज को, जब थॉट को, इस फीलिंग्स को हम उनके थ्रू पहुंचाते हैं, तब ये चीज गलत होती है। बिकॉज हम जिस प्रकार से वो बेस्ट प्रोडक्ट बताते हैं, वो एक बेस्ट प्रोडक्ट ना होते हुए जो लाइन होती है उसके थ्रू जो कुछ हमारी मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है उसको क्रिएट करने के लिए वो चीज निकलती है, इस वजह से हम उसको नहीं बोल सकते कि एक बेस्ट प्रोडक्ट है। जब एक गर्ल्स अपने खुद के सरवाइव करने के लिए, अपनी लाइफ को स्पेंड करने के लिए, अपने मोमेंट को स्पेंड करने के लिए जब लाइफ को जीती है, तब उसको एक हैप्पीनेस, एक एंजॉयफुल लाइफ चाहिए। बट एक चीज होती है कि एक टाइम पर उसको लगता है कि रिग्रेट फील होता है, मैं क्यों वुमेन बनी, मैं क्यों गर्ल बनी, मुझे मेल बनना चाहिए, मैं अच्छा, इससे अच्छा प्रिफर कर सकती थी मेल को। बट ये चीज नहीं है। आज की कंडीशन में आप देख सकते हो, लाइफ में कभी भी खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए, और इसी कॉन्फिडेंस के साथ आज जिस प्लेस तक मेल मेल जा सकता है, जिस पोजीशन पर मेल जा सकता है, उस पोजीशन पे आज भी लेडीज वहां तक पहुंची है। फॉर एग्जाम्पल आज के राष्ट्रपति आप देख सकते हो, जो उड़ीसा के हैं, लेडीज हैं। आप आज देख सकते हो सोल्जर में लेडीज हैं। आज आप देख सकते हो सबसे बड़ी ग्रेट ग्रेट अपॉर्चुनिटीज लेडीज के लिए, टीचर, टीचिंग प्रोफेशन, उसमें भी लेडीज है। आप एक ना एक चीज पर जा सकते हो, बट आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आपके अंदर एक जुनून होना चाहिए, आपके अंदर एक पैशन होना चाहिए। यस, आई एम द गर्ल, मैं एक गर्ल हूँ, मैं एक वुमेन हूँ, और मैं एक माँ बनने के लिए रेडी हूँ। मैं एक अच्छे से अच्छे फैमिली को अच्छा इन्वायरमेंट देने के लिए रेडी हूँ। ये चीज, ये थॉट प्रोसेस आपके अंदर हो, तो 100% आपकी लाइफ में कभी रिग्रेट नहीं फील होगा कि मैं एक गर्ल हूँ। तो सबसे पहले ये 3 पॉइंट्स हमें याद रखने होंगे। व्हाट इंफॉर्मेशन टू गिव गर्ल्स एंड वुमेन, हमें क्या गर्ल्स को इंफॉर्मेशन देनी चाहिए। सेकेंड चीज, व्हाई गिव इंफॉर्मेशन, ये इंफॉर्मेशन क्यों देनी चाहिए। एंड थर्ड चीज, व्हाट विल बी प्रॉब्लम्स इफ द इंफॉर्मेशन इज नॉट गिवन, ये इंफॉर्मेशन हम नहीं देंगे तो लेडीज को, गर्ल्स को क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। तो इसकी 3 चीज पर फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं। फर्स्ट चीज, व्हाट इंफॉर्मेशन टू गिव गर्ल्स एंड वुमेन्स, वुमेन्स को एंड गर्ल्स को इंफॉर्मेशन क्या देनी चाहिए। फर्स्ट, गर्ल्स को एंड इंफॉर्मेशन देनी चाहिए कि आप एक ऐसे ऐसे पर्सन हो जो आपके लाइफ के साथ आप हजारों लाइफ को चेंज कर सकते हो। हजारों लिविंग थिंग्स को, नॉन लिविंग थिंग्स को आप अपने नजरिया से, अपने आई कांटेक्ट से उनको देख सकते हो, और 100% बहुत कुछ चेंज हो सकता है। वाई वाई गिविंग इंफॉर्मेशन, ये इंफॉर्मेशन क्यों देनी चाहिए। जब मेंस्ट्रुएशन जब प्रोसेस होती है, उस प्रोसेस में क्लीननेस कैसे रहना चाहिए, उस प्रोसेस को हम किस तरह से क्लीन करके, उस चीज को हम अच्छे से अच्छे क्लीन करके उसको
प्रॉपर प्रोसेस में कैसे ला सकते हैं। एंड देन उसके बाद उस चीज को यूज करने के लिए हम पैड्स यूज करते हैं। देन उसके बाद हम पैम्पर्स यूज करते हैं। उस चीज को कैसे यूज किया जाए, देन उसके बाद उस चीज को कैसे डिस्ट्रॉय किया जाए, एंड उसको अच्छे से प्रोसेस में कैसे यूज किया जाए। फॉर एग्जाम्पल, एक वुमेन होती है, एक गर्ल्स होती है, उसको जो कुछ हम पैड यूज करते हैं उसको कितने आवर्स में यूज करना चाहिए। एक पैड हम 4 आवर तक यूज करते हैं, देन उसके बाद उसको चेंज करना ये कंपलसरी है। नहीं किए तो उस चीज को जब हम उस चीज को कंटिन्यूअसली 1 डेज तक 24 आवर्स तक 12 आवर्स तक यूज करेंगे तो वो हमें बहुत हार्मफुल होता है। बिकॉज जो हमारी वजाइना होती है, देन उसके बाद जो कुछ उसके वहां पर एक पेशी होती है, सॉरी पिशवी होती है, उस पिशवी का मुंह वहां पर खुलता है जब मेंस्ट्रुएशन साइकिल होती है। तब क्या हो सकता है, उसके थ्रू जब वो मुंह ओपन हो जाता है तो उसके जो इंटेंस इंसेक्ट होते हैं, जो कुछ उसके हार्मफुल बैक्टीरिया होते हैं, वो बॉडी के अंदर जा सकते हैं। इसकी वजह से हमें अवॉइड करना होता है, हमें उसको स्टॉप करना होता है उस इंसेक्ट को, क्योंकि हमें हार्मफुल ना दे। तो ये ध्यान रखना बहुत बहुत इम्पोर्टेंट होता है। फिर उसके बाद हम उस चीज को यूज करने के बाद उसको कैसे सेफली डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सब लोग बोलते हैं कि जो कुछ हम यूज करते हैं पैड्स वगैरह, तो उसको क्या करना होता है हमें, सब लोग बोलते हैं कि उसको डिस्ट्रॉय करना होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट। बट एक चीज होती है कि जब हम उसको जलाकर राख कर देते हैं, वो बहुत हार्मफुल होता है। क्योंकि जब इन्वायरमेंट में वो जो कुछ ब्लड लगा हुआ होता है, उसको इंसेक्ट सबसे ज्यादा, आप देख सकते हो, जब एक स्नेक होता है, स्नेक को एक एक छोटी सी उसको प्रॉब्लम आया या बाई चांस उसका थोड़ा कट गया, उसके ऊपर ब्लड जब निकलता है, वो ब्लड की वजह से उसकी डेथ होती है। तो उसी प्रकार से इंसेक्ट, जितने सारे इस इन्वायरमेंट में इंसेक्ट है, वो डायरेक्टली ब्लड ब्लड पर अटैक कर सकते हैं। इस वजह से उसको प्रॉपरली हम कैसे सेफली उनको प्रॉपरली मैनेज कैसे किया जाए, ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट होता है। आज देख सकते हो, इस लाइफ को स्पेंड करते समय बहुत सारे ऐसे एंजॉयमेंट आते हैं, बहुत सारे मोमेंट्स आते हैं गर्ल्स के लिए। कि फॉर एग्जांपल, एक गर्ल्स होती है डांसिंग क्लासेस के लिए जाती है, एक गर्ल्स होती है टीचिंग प्रोफेशन के लिए जाती है, एक गर्ल्स होती है कि एंजॉय करने के लिए जाती है अपने फ्रेंड्स के साथ, एक गर्ल्स होती है स्टूडेंट होती है, वो एजुकेशन करने के लिए जाती है। बहुत सारे एक गर्ल्स होती है जो सोल्जर में होती है। फॉर एग्जाम्पल, वो पुलिस में हो, आईपीएस में हो, किसी किसी आईएएस हो, किसी पोस्ट पर हो, उस वो एक गर्ल्स है, तो उसको जो कुछ पीरियड्स आने हैं वो आने ही है। आप उसको अवॉइड नहीं कर सकते, ये हमें बहुत बहुत डीपली जाकर सोचना होता है। उसको अवॉइड करना ये चीज नहीं है हमारा सॉल्यूशन। उसको प्रॉपरली मेंटेन कैसे करना है, उसको प्रॉपरली मैनेज कैसे करना है, उसको प्रॉपरली हम उस चीज को, उस प्रोसेस को सेफली कैसे हमारी एक्सेप्ट करके उसको प्रॉपरली वे में लाकर कैसे इसको एंजॉयमेंट करना है, वो चीज बहुत बहुत इम्पोर्टेंट होती है। आज बोलते हैं कि मेल्स को इस चीज को बहुत बहुत एंजॉयमेंट करते हैं, बट वो चीज नहीं होती है। आप आप एक गर्ल्स हो तो प्राउड फील करिए, आप एक वुमेन्स हो तो प्राउड फील करिए। जब जब जन्म देने के लिए हमें जब जन्म देने के लिए हमें एक माँ की जरूरत होती है, राखी बांधने के लिए बहन की जरूरत होती है, कहानी बताने के लिए ग्रैंड मदर की जरूरत होती है, लाइफ को स्पेंड करने के लिए फ्रेंड्स की, गर्ल फ्रेंड्स की जरूरत होती है, और लाइफ को साथ में बिठाने के लिए एक वाइफ की जरूरत होती है। बट ये सब कुछ करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल एक एक गर्ल्स को जीना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। तो थैंक यू सो मच गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी, एंड आपका बहुत वैल्यूएबल टाइम मुझे दिया, तो थैंक यू सो मच। थैंक यू संतोष। तो
नेक्स्ट अब लुबना राशिद जो सोपोर लॉ कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर की लॉ स्टूडेंट है। करंटली वो अभी LLB BA की पढ़ाई कर रही है और वो आगे जाके एक एडवोकेट बनना चाहती है। तो लुबना, अब नेक्स्ट आपकी बारी। Okay, hello everybody. As they said, my name is Zuba Rashid, and today I'm here to talk about policy discussion on menstrual health and hygiene. There's so many taboos that goes on and on, you know. You are impure, dirty, or sinful while you're menstruating. Don't cook. Don't even enter into the kitchen. No, you're not allowed to enter into the places of worship, considering the notion that you're impure. And you're not even supposed to wash your genitals during your period, considering the fact that it might contaminate the water bodies. If we talk about the myths, the origin of the myth dates back to the Vedic times and has often been linked to Indra's staying of Ritra. For it has been declared in the Veda that guilt of killing a Brahman appears every month as menstrual flow, as women had taken up themselves as part of Indra's guilt. So many thoughts, right? Menstruation is considered a taboo topic, and society generally expects us to keep it hidden, often and made to feel ashamed and embarrassed, going as far as being bullied or abused for having these menstruations. Many women from background communities lack access to affordable and hygienic menstrual products. This leads to unhygienic practices, using improvised materials, or resorting to unsafe alternatives. According to a study of UNICEF, only 36% of India's 355 million menstruating females use sanitary napkins, while the rest use rags, husks, newspapers, ashes, leaves, mud, and soil. Poor menstrual hygiene is responsible for almost 70% of reproductive and urinary tract illnesses in Indian women. Some girls skip school for around 5 days every month due to the lack of menstrual products and sanitary facilities. The girls are afraid of staining these clothes and embarrassed at a target of bullying or abuse. As a result, gender inequality widens. Okay, so let me tell you about an incident that shook the whole country, and the only thing to blame is the lack of awareness. A 12-year-old girl died after she was tortured by her 30-year-old brother as he mistook blood on the bedsheet from the sister's menses as a result of ego. According to the officials, the girl had no knowledge about the menstruation and didn't know that she had got her period. Her brother, unaware of the fact that she was having her first menses, got angry and he burned her with tongs in the mouth and the back. She was taken to the hospital later but was declared brought dead. It is extremely sad that even today the word menstruation remains a taboo for a large part of the population. They're ashamed to even ask for menstrual hygiene products as if it were drugs. Governments, NGOs, and health departments have focused on incorporating menstrual health education into school curriculum. This includes teaching accurate information about menstruation, debunking myths, and promoting proper menstrual hygiene, like the Rashtriya Kishore Swasthya कार्यक्रम for the same. Initiating Initiatives have been launched to increase access to affordable and hygienic menstrual products. The government has launched the menstrual hygiene scheme under Swachh Bharat Abhiyan. This scheme focuses on increasing awareness, access, and availability of affordable sanitary napkins, especially in rural areas. Additionally, sanitary napkins are exempted from the goods and services tax to make them more affordable. While progresses have been made, there still exists this stigma, these taboos and myths. The topic of menstruation is still profane. Ministry of Health and Education should rebust and producing affordable sanitary napkins, establishing sanitation facilities, and spread more and more awareness through menstrual health education programs and awareness programs. This will include funding campaigns to challenge stigma. This promote to promote open dialogue and the inclusion of men to break the barriers. Thank you, and may you all have a nice day ahead. Thank you, Labna, for your insightful words.
Next, I'd like to call upon Hityashi Bhatt. Hityashi is an undergraduate student doing a BBA from Vishveshwaraya's Group of Institute in Greater Noida. She wants to bring new ideas in the market in order to bring a change in the vision and mind of society. Hityashi, are we audible to you? Hello, Hityashi. Let's move on to the next participant for now. I'd like to call upon Raj Rani Sharma. Miss Raj Rani Sharma is a government teacher from Meerut, Uttar Pradesh. She has completed an MSc B in education, and she is associated with many organizations in Meerut and has received many awards for helping such organizations. She is working with Pink Is She Foundation for 6 years. We are honored to have you amongst us here today. Thank you. Thank you, Anna. I'm audible? Yeah, okay, thank you. आप लोग इतना अच्छा डिस्कस कर रहे हो, पहले तो इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई कि आप लोग आ रहे हैं इस टॉपिक पे, आगे लेके आ रहे हैं इस टॉपिक को और बच्चे आपस में इस पे बात कर रहे हैं। क्योंकि मैं जहां तक देख रही हूँ अभी हमारा जो मेन मेंस्ट्रुएशन पर रिसेंटली अभी सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर किया है एक यूनिफॉर्म नेशनल पॉलिसी के लिए टू इंश्योर मेंस्ट्रुअल हेल्थ बाय प्रोवाइडिंग sanitary pads, vending disposable mechanism, and exclusive washrooms for girls, especially in schools. अगर मैं बात कर रही हूँ स्कूल्स की, तो मैं आपसे यहाँ स्कूल्स के अलावा मैं पूरे काफी 6-7 साल से यहाँ पर काम कर रही हूँ अर्बन और रूरल एरियाज में, जिससे बच्चियों को मैं इसके बारे में अवेयर कर पाऊँ। ये बायोलॉजिकल प्रोसेस है, उसमें आप काफी बात कर चुके हो। अभी संतोष जी ने पूरा प्रोसेस आपको पूरा बताया, पूरा डिटेल में बता दिया। ये प्रोसेस अगर जब हम लड़कियों से बात डिस्कस करते हैं, लेडीज से डिस्कस करते हैं, तो मुझे लगता है कि बच्चियां भी कभी कभी इतना शाय फील करती है कि वो सामने ही नहीं आती, वो बात ही नहीं करना चाहती इस टॉपिक पर। और मैं जब अर्बन रूरल एरिया की तो अर्बन एरिया की तो बात आप जानते हैं कि आप सब बच्चे यहाँ पर पढ़े लिखे अच्छे स्कूलों में पढ़ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर भी अभी बहुत सारे मिथ्स और टैबूज हैं, इतने सारे हैं कि जब भी अभी एक रिसेंटली मैंने एक बहुत लेटेस्ट पब्लिक स्कूल है यहाँ पर मेरठ का, बहुत अच्छा, वहां पे मैंने बात की बच्चियों से। तो अगर मैं बायोलॉजी की गर्ल्स को छोड़ूं जो बायोलॉजी पढ़ रही हैं 11th-12th क्लास में, इसके अलावा कुछ बच्चों का जवाब था कि अगर मैं पूछती हूँ व्हाट इज मेंस्ट्रुएशन ब्लड, व्हाट यू नो अबाउट द मेंस्ट्रुएशन ब्लड, तो बोलती हैं डर्टी ब्लड, गंदा खून है। अगर वो यही नहीं बात जानती है अभी तक कि गंदा खून है हमारा, ये तो पार्ट ऑफ ए साइकिल है हमारा, रिप्रोडक्टिव हेल्थ से कितना रिलेटेड है, तो अभी तो हमारे स्कूलों को भी बहुत ज्यादा, टीचर्स को भी अवेयर करना होगा इस बारे में कि वो बच्चियों को, या मैं कहूँ तो सबसे ज्यादा जिम्मेदारी माओ की बनती है, उनकी मदर्स की बनती है, जो उनको स्टार्टिंग से इवन मैं तो ये जरूरी नहीं है कि जब बच्ची को हो साइकिल वो उसी दिन उसको बताए, उसको पहले से भी प्रिपेयर किया जा सकता है कि वो स्कूल जाती है, बाहर बच्चे खेलती हैं, गर्ल्स कोचिंग जाती हैं, कि उनको अगर रिसेंटली उनको हो जाए तो अचानक से उनके बैग में क्या क्या चीजें होनी चाहिए, जिससे कि वो उनको वहां पे, क्योंकि आप भी खुद इतने बड़े बड़े कॉलेज में पढ़ते हो, अगर मैं आप लोगों से पूछूं तो आप बता पाएंगे कि आपके स्कूलों में वेंडिंग मशीन है? मैं भी रिसेंटली ड्यू के कॉलेज में गई थी, वहां का वॉशरूम मैंने देखा, इंसिनरेटर लगा हुआ था पर वेंडिंग मशीन नहीं थी। तो अगर लड़की बेटी के पास, उस बच्ची के पास इस टाइम पर सैनिटरी पैड नहीं होगा तो वो कहाँ से उसको यूज करेगी उसके, तो ये बहुत जरूरी है कि हर स्कूल में एक वेंडिंग मशीन, सैनिटरी वेंडिंग मशीन, उसके लिए इंसिनरेटर और एक बहुत साफ और क्लीन वॉशरूम होना बहुत जरूरी है, जहां से उसको सेफ एनवायरनमेंट तो एटलीस्ट मिल पाए बच्ची को कि वो उसको यूज कर पाए। ये बात तो बहुत दूर की बात है कि इसको डिस्पोज कैसे करना है, क्या करना है। पहले तो हम बच्चे को, जो हमारे रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि स्कूल्स में या बच्चियों को सैनिटरी पैड प्रोवाइड किए जाए, वो भी फ्री, अभी तो हम वो ही नहीं कर पा रहे हैं। बहुत सारे स्कूल्स ऐसे हैं जहां पर ये प्रोवाइड ही नहीं होते। अभी अगर मैं बात करूं तो मैंने लेटेस्ट अभी हमने एक प्रोग्राम यहाँ पे मेरठ में स्टार्ट किया था सखी के नाम से। सखी के अंडर हमने जितने भी हमारे सरकारी स्कूल्स हैं, पहले वहां के कुछ टीचर्स को हमने चुना, 400 टीचर्स थी जिनको हमने ट्रेंड किया। उसके बाद हमने उन टीचर्स के थ्रू
हर स्कूल में जितनी भी 6 to 8 तक पढ़ने वाली बच्चियां हैं उनको क्लासेस दी, उनको ट्रेन किया, फ्री सैनिटरी नैपकिन प्रोवाइड किया। प्रोग्राम स्पॉन्सर्ड था बाय पीएनजी से, विस्पर से। तो ऐसे ऐसे प्रोग्राम, मैं इतना बड़ा प्रोग्राम चला, लेकिन एक्चुअली मैं कहूँ तो हमें कोई सपोर्ट नहीं मिला हमारे सिस्टम से। आप इतना सारा पैसा भी खर्च कर रहे हैं, आप इतना टाइम भी लगा रहे हैं, मैंडेटरी सब चीजें दे रहे हैं, लेकिन हमारा सिस्टम ही हमें सपोर्ट नहीं करता। तो ये बहुत दिक्कत की बात है कि हम स्कूलों में फिर इस तरह के एनवायरनमेंट को कैसे क्रिएट कर पाएंगे जहां पर बच्चे अपने को सेफ समझ सके, वो रेगुलर बेसिस पे स्कूल आ सके। 3 दिन तो वो अपना अवॉइड ही करती है। मैंने कई बच्चों से बात की है, तो 2 दिन तो एटलीस्ट वो स्कूल ही नहीं आती। तो सोचिए 2 दिन में कितना बड़ा टॉपिक है उनका, स्कूलों में जो कोचिंग क्लासेस चलती होंगी वो छूट जाता है। तो ये बहुत जरूरी है कि गवर्नमेंट इंश्योर करे हर स्कूल में कि एक वेंडिंग मशीन जहाँ बच्चों को फ्री सैनिटरी नैपकिन मिल सके, और इंसिनरेटर तो वहां पे उनको प्रोवाइड हो ही सके जरूर। बाकी आप कुछ पूछना चाहते हैं तो मैं सच बताऊं तो अब जैसे अगर ये पॉलिसी, यूनिफॉर्म पॉलिसी लागू हो जाती है और स्टेट्स में, और बच्चियों को सैनिटरी नैपकिन मिलने भी लगे, तो कुछ स्कूल ऐसे हैं जहाँ पर जेंट्स हैं। मेरे खुद अपना डिपार्टमेंट में, सरकारी डिपार्टमेंट में, वो जब सैनिटरी नैपकिन आते हैं तो वो जेंट्स के अंडर में आते हैं, और वो सारे जो मेल टीचर्स हैं या जो मेल हमारे कर्मचारी हैं वो उसको प्रोवाइड ही नहीं करना चाहते। उनको शर्म आती है उसको आगे टीचर्स को या लड़कियों को देने में, तो वो वहीं रखे रहते हैं और वो वहीं खराब होते रहते हैं। कोई अगर उनको, जैसे मैंने काम किया, उनको पता है कि मैं काम करती हूँ, तो मुझे कॉल आता है, मैडम आप ही ले जाइए, आप ही बांट दीजिए हमारे स्कूलों में। तो एक या दो लोगों के आगे आने से काम नहीं चलेगा। सभी टीचर्स को, सभी लोगों को आगे आना होगा। इवन जेंट्स को ज्यादा ट्रेन करना होगा इसके लिए कि वो भी इस चीज पे खुल के बोल सकें। हमारे घर में हम लड़कियों को ही ट्रेनिंग क्यों दें कि मेंस्ट्रुएशन क्या होता है, उनको क्या क्या दिक्कतें होती हैं, 3 दिन कितना पेन होता है, किस किस दौर से वो गुजरती हैं, उस टाइम कितना हार्मोनल चेंज होता है। हमें, मुझे लगता है कि एक टाइम पर आकर हमारे जो घर में बॉयज हैं या जो हमारे बच्चे हैं, उनको भी ये ट्रेनिंग, उनको भी इस बारे में बताना होगा, तभी हम एक बहुत अच्छा सेफ एनवायरनमेंट क्रिएट कर पाएंगे अपनी बच्चियों के लिए, चाहे वो घर हो, चाहे वो स्कूल हो, चाहे कोई भी अदर प्लेस हो। ओवर टू यू आना। Thank you, ma'am, for your insightful words. अभी मैं हित्याशी को बुलाना चाहती हूँ। हित्याशी भट्ट एक अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट है जो अभी BBA फ्रॉम विश्वेश्वरैया ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट इन ग्रेटर नोएडा से एजुकेशन कर रही है। She wants to bring new ideas in the market in order to bring a change in the vision and mind of society. Hityashi. Hello everyone, am I audible? Please let me know because I'm having low connection. Am I audible to everyone? Yes, you are. Okay, thank you so much. So basically, first of all, as my name suggests, it's Hiteshi. That means well-wisher, one should think about others first. So this seminar has given me an opportunity to talk about girls, and being a girl, I have suffered the situation, going through menstruation, having cramps, periods, and whatnot. So basically, I remember the day when I was, I guess, 13 years old, and I was in my class 6 or 7, something like that. So I was like, basically, I was sitting in my class and I went back home, and I remember I was having a stain on my skirt. I went home and talked to my mother about it, that what it is about. So my mother was like, you don't worry, it's natural, it's not something more. But I was not knowing about what it is, and I got shocked that why the blood is pouring out from the main area. So I was like, I talked about my mom, that what is it. So my mom was like, you just use this pad, this is a sanitary pad and you have to use it like this. She showed me the whole process, but still my mind was stuck at what it is actually. So before letting someone know about menstruation and why blood comes out of your vagina, first you should know that what menstruation exactly is. So when I learned about what menstruation is, it was all late and I was just like months past that I was having menstruation. So basically, first of all, talking about hygiene policies and hygienic factors, I need to know that people should know what menstruation exactly is.
So the thin line of the uterus, the girls are having uterus, everybody has uterus. So basically the girls are having uterus, the thin line of the uterus declines and blood start coming. That period is also known as ovulation, when eggs are produced, and basically it generates the thought that you are not pregnant. So if there is not baby in the uterus, you start menstruation. So as a girl, I have suffered a lot being in school or going anywhere else when I was having menstruation. Many of the girls I have seen, and personally I have also done that. Basically, being a girl, when I was sitting in my class, I used to stand up and just say that please check on my skirt if I'm having the stain or not. So basically, if you are doing the same thing, telling your friends, asking them to please check out if there's stain or not, don't worry about it all, because it's all natural and it's very good thing to be meant to be on menstruation. It's natural, it's not a shame to be have on. And also this is a topic which we need not need to like learn or have some knowledge. We can speak on it because we are girls and we have suffered this thing. So yeah, if I talk about hygiene during menstruation, I am a student which is an undergraduate and I'm doing BBA, as she said. Thank you so much. So basically, living in hostel has also shown me the sides of girls. The girls here, I am using the common washroom which all the girls are using, because in hostel everybody don't get the private washrooms. So I'm using the same washrooms and bathrooms. So I have seen the wrappers of the pads. I have seen visible in front of my eyes that people leave it because they are not aware of what impact that small napkin can get on your health. And only last night, if I would love to share an experience, my warden ma'am came to my floor and she was saying, I'll just sign you a fine if I will find any pad on the floor or in the washroom. So yeah, it's like, not if she will not impose the fine, but she will talk about what effect it will get it on your health. Like if you are throwing the pads normally here and there, it will affect your head really badly, because it's not the pure blood which is coming out of your body, it's the impure blood, and it can harm you in so many ways. Because if you have seen that the blood which comes in the day, and after one day you will see that blood, it will turn into black. So you can see how hazardous it is to your health. So first of all, the hygienic factor we should be considered during menstruation is that you should not throw pads here and there, because it could affect somebody's health really badly. If we can stop smoking, if we can say the person stop smoking because that smoke hurt us, then we can say that don't throw pads here and there, it can affect our health as well. And secondly, if I talk about the most important measure of hygiene factor is that changing of pads, tampons, and menstruation cup time to time. If you are using a sanitary pad, we should know that we should change it after every 6 hours, because after every 6 hours it starts declining and it will affect your vagina in reverse. If your vagina is throwing out the blood out, it will get in reverse, because obviously the pad has a capacity of holding your blood only for 6 hours. And also, if you are using menstrual cups and tampons, usually you should be aware that after 4 to 6 hours or 8 hours, you need to remove that. And also, before discussing these things, that what to use during menstruation, what is a hygienic factor, we need people to be aware of what menstruation is, and they should not be ashamed of it, because most of the families don't discuss these things about with their children. Also, if I talk about myself, I told my mother about this thing, that I'm attending a seminar on menstruation and hygiene. So she was like, okay, be bold, be confident. But she didn't talk about to me that, do you know what menstruation exactly is? Because she has never talked to me on that topic. So yeah, it's like, first of all, we need students to get aware of what menstruation exactly is, because before it occurs to them, they should be aware. Because that situation of seeing the blood on your clothes is very terrific, and I am gone through that, and I know that what it is. And it's exactly, school should also change its policies, because honestly, in school, in the school which I was learning, there was a cabin known as medical kit cabin, where we were getting all the medicines and pads. But honestly, when I was talking to my teacher that I want a pad, I'm in need of a pad, she used to say me that
you just stop here, I'll go myself and bring the pad, you don't go. So basically people are ashamed of talking about it, and we have seen so many videos out there on YouTube and Instagram that they are showing that don't wrap the sanitary pads in newspaper, just buy them freely, do that. But still people are ashamed of that, because there is no positive thinking about this. And it is a positive thing, it happens to every girl. And if it doesn't happen, if it happens then it's a problem, and if it doesn't happen then it's also a problem, because society thinks that you are maybe pregnant or you have done something wrong. So why people should worry about discussing it openly? So thank you so much to this organization that you have given me this opportunity to speak on menstruation, so that I can spread awareness on girls that it's not a shame to be. You should be frank, you should be free, you should be discussing everything on this, and be hygienic totally on this baby. Thank you so much. Thank you, Hitashi, for your wonderful words. They were really helpful indeed. Next, I'd like to call upon Ms. Chavi Agarwal. Ms. Chavi is a passionate teacher with more than 13 years of experience developing and implementing diverse curriculum covering wide range of subjects. She's also a bilingual teacher with excellent references and more than 7 years of experience of teaching in rural areas. She's highly effective at working with parents to promote better learning culture. I'd now like to call upon Ms. Chavi Agarwal to present her policies. Thank you. Hello, Chavi ma'am, are we audible to you? Ma'am? Kunjan, do you want to take the next participant? Yeah. Sure. Let's move further. So I'd like to invite Soumik Bhagat, who's from Kolkata and is pursuing BBA at Usha Martin University through Sunstone. Over to you, Soumik. Yeah, ma'am. Ma'am, first of all, will I discuss, ma'am, menstrual health and hygiene problem, ma'am? There are several menstrual health and hygiene problem that individual may face. Many girls are same common challenges face. Limited access to menstrual health hygiene product. Rural area, many individual particular those from a low income background communities face difficulty in access affordability menstrual hygiene product like sanitary pads or menstrual cups. Lack of clean and private toilets with proper water and sanitation infrastructure in school, workplace, and public space can make it challenging for individual to manage their menstruation hygiene. Uh, some discuss problem like menstrual health issue and disorder condition such as overly syndrome, PCOS, and menstrual irregulation can cause significant health issue like environmental impact. Use of non-biodegradable menstrual product contribute to environmental pollution and waste management challenges. Uh, Menstrual health and hygiene problem are often rooted in gender, including limited access to resource, societal attitudes. Uh, it's responsibility for managing menstrual health. Thank you, ma'am. Thank you, Soumik, for your insightful words. I'd like to now call upon Arpita to take on the next participant.
We would like to call Chavi ma'am next. She's a passionate teacher with 13 years of experience developing and implementing diverse curriculum covering a wide range of subjects. Bilingual teacher with excellent references with more than 7 years experience in teaching in rural areas. Highly effective at working with parents to promote a better learning culture. Chavi ma'am, please. Over to you. हेलो सभी को यहाँ मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं। इस टॉपिक पे पहली बात तो बात होनी चाहिए और आप लोग लगातार ऐसे प्रोग्राम्स के और मतलब मैसेज स्टोरीज के माध्यम से इस टॉपिक को कवर कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। तो इस सत्र में जोड़ने के लिए मुझे आप सबका शुक्रिया। और मैं ये बताना चाहती हूँ कि जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ये टॉपिक ऐसा हो चुका है सोसाइटी में कि इस पे ज्यादातर देखा जाता है कि बात केवल महिलाएं ही करती हैं और मतलब मैसेज केवल महिलाओं के बीच में ही जाता है। जहाँ पर ये बातें हो रही होती है वहाँ पे लोग ट्राई करते हैं कि पुरुष ना हो या फिर लड़के ना हो। अभी रिसेंटली हम लोग एक स्कूल में गए थे, मेरा अपना खुद का एक्सपीरियंस है कि वो जूनियर स्कूल है, तो वहाँ पे लड़के और लड़कियां दोनों पढ़ते हैं, कोएड है। तो फिर वहाँ पे जब हम लोग पैड डिस्ट्रीब्यूशन एंड ये सब अवेयरनेस की बातें कर रहे थे तो मैम ने बोला कि ऐसा करते हैं कि हम लोग ऐसी जगह पे ये मीटिंग करते हैं या ये बातें करते हैं जहाँ पे बॉयज ना हो। हम लोगों ने कहा कि अरे बॉयज नहीं होंगे तो फिर हमारी ये बातें तो गर्ल्स जानती है, मैक्सिमम जिनके साथ बीत रही है उनको तो पता ही है, लेकिन बॉयज के लिए भी जानना बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि वो जो प्रॉब्लम्स लड़कियां फेस करती हैं या जो उनकी मदर्स फेस करती हैं या जो चीजें वो झेल रही हैं उसके बारे में वो जानेंगे तो वो उनकी फीलिंग्स को रिस्पेक्ट कर पाएंगे, उनकी प्रॉब्लम्स के बारे में जान के उनको सपोर्ट कर पाएंगे। तो उनके लिए तो जानना इस चीज को ज्यादा जरूरी है। बट दे सेड कि नहीं, वो बाद में क्या करते हैं, जब जान जाते हैं ये सब बातें सुन लेते हैं, अभी तो वो बाद में मजाक उड़ाते हैं। मतलब हम लोग लिटरली ये चीज सुन के शॉक्ड थे कि अगर हम यहाँ पे बात करके चले जाएंगे तो उसके बाद वो उस टॉपिक पे मजाक उड़ाने के लहजे में बात करेंगे, तो कैसे उनको समझाया जाए। तो मेरा ये कहना है कि जो भी लोग इस तरीके के वर्क से जुड़े हुए हैं या इस तरीके की चीजों के बारे में अवेयरनेस सोसाइटी में लाते हैं, उनको ये जरूर इंश्योर करना चाहिए कि वहाँ पे दोनों इक्वलिटी में लोग प्रेजेंट हो, जिससे कि हमारी बात समाज के हर व्यक्ति तक पहुंचे। ना सिर्फ महिलाओं के बीच में हमें ये बात करनी है, हमें समाज में इसके बारे में जो भ्रांतियां हैं, जो मिथक हैं, जो थॉट्स लोगों के दिमाग में बस चुके हैं उनको चेंज करना है। ना कि लड़कियों को सिर्फ पैड दे दिया, अरे पैड तो वो 5-10 रुपए दे के भी खरीद ही लेंगी। तो मेन हमारा जो उद्देश्य है कि हम उनको वो चीज प्रोवाइड कर सकें, वो नॉलेज प्रोवाइड कर सकें लड़कियों को, साथ साथ लड़कों को भी, और समाज में एक इसके लिए सपोर्टिव एटमॉस्फेयर क्रिएट कर सके। तो बहुत मुझे लगता है कि इस पे बहुत अभी काम करने की जरूरत है। हम लोगों को लगता है कई बार कि हम लोगों ने बहुत सारे इवेंट्स कर लिए हैं, बहुत ज्यादा लोगों में अवेयरनेस हो गई है, बट अभी भी ये चीज लोगों के बीच में इतनी मतलब इस इजी वे में ली जाती है कि अरे महीने के 3 दिन ही तो है, बीत जाएंगे। औरतें तो चलो ये होता है कि हमें तो रहना है उस लाइफ में और काम करना ही है भाई, 3 दिन क्या अपनी जिंदगी रोक तो नहीं देंगे ना, लाइफ के मंथ के 3 महीने वेस्ट तो नहीं कर देंगे भाई। वर्क प्लेस पे जाना है, पढ़ाना है, या फिर बच्चियां हैं तो उनको पढ़ने आना है। वो सब चैलेंजेस वो इतनी इजी वे में फेस करने लगती हैं कि सबको लगता है कि अरे ये बहुत आसान चीज है। तो हमें वो दिखाना है और बताना है लोगों को कि आसान नहीं है, हमने इसे आसान समझ के ट्रीट करना शुरू कर दिया है। तो आप भी इतना आसान में मत लो, लेकिन ये मुश्किल काम है 3 दिनों में सारी चीजों को मैनेज करना। तो मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा इस पे अभी काम करने की जरूरत है और स्टिल हम लोग कर रहे हैं। तो एक ऐसा सोसाइटी, एक ऐसा एनवायरमेंट बनाना है कि जहाँ पे लड़कियां जो हैं वो पैड खरीदते वक्त शर्माए नहीं। अगर उनके साथ ये वाले दिन चल रहे हैं, उनके वो कुछ प्रॉब्लम है, तो वो फ्रेंकली बोल सकें अपनी क्लास में कि हाँ मैम मुझे ये प्रॉब्लम है। अदरवाइज मुंह बना के पूरे टाइम पे बैठी रहती हैं और सोचो कि क्यों नहीं बोल रही हैं, तो उसका कुछ रीजन नहीं बताती हैं, वो लोग इधर उधर करके बताने में उनको प्रॉब्लम होती है। तो हमें उन सारे मिथक को तोड़ना होगा और साथ में मिलकर इस माहौल को इजी बनाना होगा। और मैं थोड़ा नेटवर्क में कनेक्ट ना हो पाने की वजह से पहले वाले लोगों को सुन नहीं पाई हूँ। तो आप लोगों के कुछ डिस्कशन चल रहे थे आई थिंक इस पे। तो मुझे ये कनेक्ट कोई करेगा कि ये मतलब क्या अभी बात हो रही थी, सॉरी। तो मुझे सुन पा रहा है? तो मैं अपनी बात
मैं अपनी बात कंप्लीट कर लूं इस वजह से कि हम एक ऐसी दुनिया की कल्पना करते हैं एक महिला होने के नाते कि जहाँ पे कोई भी हमारी चीजों को बहुत लाइटली नहीं ले, इन सारे प्रॉब्लम्स को बहुत इजी ना समझे और सपोर्टिव एक एनवायरनमेंट रखे। बॉयज के बीच में भी और मेल्स के बीच में भी ये मैसेज कन्वे हो, उनको भी इस डिबेट में, इस प्रोग्राम में शामिल करें, वो भी सुने समझें, है ना। सिर्फ लड़कियां और महिलाएं ही आपस में बात करेंगी, इस वीडियोस को मैक्सिमम रीच तक पहुंचाना चाहिए ताकि लोग सुने समझे जाने। थैंक यू फॉर कनेक्टिंग मी। थैंक यू सो मच मैम। तो एक्चुअली यहाँ पे काफी स्पीकर्स है और हम लोग अलग अलग अपने अपने थॉट्स दे रहे थे, जो भी विचार हो मेंस्ट्रुएशन और अवेयरनेस के बारे में। एंड नेक्स्ट अब कंटिन्यू करते हुए आई वुड लाइक टू इनवाइट मिस माया सिंह। शी इज अ टीचर इन बुलंदशहर and she's the founder of Happy Periods. So over to you, Maya ma'am. Ma'am, you're not audible. Maya ma'am, can you hear us? Ma'am, if you try rejoining, that might help if there are any issues for audio. Hello. Yes, you're audible. Hello, my name is Maya Singh, founder of Happy Periods. Can I audible? Yes, ma'am. सबसे पहले तो मैं हैप्पी पीरियड्स के बारे में बताना चाहूंगी। हैप्पी पीरियड्स जो है ट्राई टू क्रिएट अ प्लेटफॉर्म वेयर पीपल कैन टॉक अबाउट मेंस्ट्रुएशन फ्रीली। अभी पॉलिसी की बात हो रही थी तो मुझे ऐसा लगता है कि दुनिया की आधी पॉपुलेशन मेंस्ट्रुएशन से गुजरती है, तो इस पे बात, और हम बात नहीं करते इस पे। सबसे इम्पोर्टेंट है कि हम इस पे बात करें, इस चर्चा को आम बनाएं। ज्यादातर लड़कियां जो है मतलब अभी तो मतलब 8 ईयर की उम्र से लेके 12 के बीच में उनका मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाता है, लेकिन बच्चे अवेयर नहीं होते हैं। हम आज भी कितना भी पढ़ लिख ले, अच्छे अच्छे पढ़े लिखे हैं, लेकिन वो इस टॉपिक पे बात नहीं करते हैं। तो एज अ टीचर मुझे ये लगता है कि सबसे पहले तो टीचर्स को एजुकेट करना बहुत जरूरी है। अगर टीचर टीचर ही एक ऐसा बंदा है जो सोसाइटीज में चेंज ला सकता है, और बच्चे जो है टीचर्स की बात को बहुत ध्यान से सुनते हैं। तो एज अ टीचर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा होती है कि हम बच्चे को इस चीज के लिए अवेयर करें। और जो हमारे प्राइवेट स्कूल के बच्चे हैं वहाँ पे तो प्रॉपर वर्कशॉप ऑर्गेनाइज होती है, बट हमारे जो गवर्नमेंट स्कूल हैं उसमें वर्कशॉप ऑर्गेनाइज नहीं होती है। हमारे स्कूल में जो बच्चे आते हैं वो रूरल एरिया से आते हैं, जिनके पेरेंट्स भी पढ़े लिखे नहीं होते हैं, तो वो इस चीज को लेके अवेयर नहीं होते। तो वहां पे काम करने की ज्यादा जरूरत है, क्योंकि अर्बन एरिया में तो बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं तो बच्चे इस चीज को लेके अवेयर हैं, इवन स्कूल भी इस चीज को अवेयर करता है। हमारी गवर्नमेंट है साक्षरता मिशन करती है ना। पढ़ना क्यों जरूरी है? पढ़ते हम इसलिए हैं ताकि हम अपने रोजमर्रा के जीवन को, बड़े कामों को आसानी से कर सके, जोड़ घटाना जो भी है, और पढ़ के ही हम नॉलेज गेन से कर सकते हैं। उसी तरह हमें शारीरिक साक्षरता जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम अपने बॉडी को समझेंगे तभी हम उससे प्यार करेंगे।
अगर आप एक अनपढ़ व्यक्ति को एक स्टोरी बुक लाके दे दीजिए, उसके लिए उसकी कोई वैल्यू नहीं है, वो उसकी इंपॉर्टेंस को नहीं समझेगा। लेकिन अगर एक पढ़े लिखे बच्चे को आप वो बुक पकड़ाइए तो वो उसको बहुत संभाल के रखेगा। ठीक है, ऐसे ही अगर आप गांव में रूरल एरिया में जाइए, किसी लेडीज को मेंस्ट्रुअल कप देख के देखिए उसका क्या रिएक्शन है, उसके लिए उसकी कोई वैल्यू नहीं है। बट अगर एक पढ़ा लिखा व्यक्ति है, एजुकेटेड है, कोई लेडी है, उसको वो तो बहुत खुश हो जाएगी कि मुझे ये चीज मिल गई, फ्री में मिल गई। तो सबसे पहले तो शारीरिक एजुकेशन, हमारा बॉडी कैसे ग्रो करता है, हमारा जो कैसे हमें एज के हिसाब से उसमें चेंजेस आते हैं, तो इसके लिए बच्चे को अगर हम पहले से ही अवेयर करते रहे, अगर हम डायरेक्ट उसको मेंस्ट्रुएशन समझाएंगे बच्चा नहीं समझेगा, लेकिन उसकी बॉडी को लेके हम उसको एजुकेट करते रहे कि जैसे जैसे आप बड़े होते हो ऐसे ऐसे आपके बॉडी में चेंजेस आते हैं। इवन बॉयज और गर्ल्स दोनों में चेंजेस आते हैं, तो बॉयज को भी एजुकेट करने की जरूरत है, ऐसा नहीं है कि केवल गर्ल्स में चेंजेस आते हैं। दूसरी बात, जैसे हमारा वेजाइना है, वेजाइनल ओपनिंग जो होती है वो उसमें दो ओपनिंग होती है, एक से हम यूरिनेट करते हैं और एक से हम मेंस्ट्रुएट करते हैं। तो पहले तो बच्चों को हमें ये क्लियर करना है। मैंने बहुत सारी जगह वर्कशॉप दी है, बहुत से लेडीज को ये पता ही नहीं होता है, वो टेम्पोन्स यूज नहीं करती हैं क्योंकि हमें बार बार यूरिन पास करने के लिए जाना पड़ेगा तो हमें चेंज करना पड़ेगा, या मेंस्ट्रुअल कप यूज नहीं करती, तो उन्हें ये पता ही नहीं है कि ये दो ओपनिंग अलग अलग होती हैं। फिर बात आती है जब हम बच्चों को पहले से तैयार कर रहे हैं तो हमें बॉडी में इन चेंजेस को बताना होगा कि ऐसे ऐसे होता है। देन हम आते हैं न्यूट्रिशन पे। अब ये होता है, लोग बोलते हैं ना कि जिनको पीरियड ज्यादा दिन तक आता है वो एनीमिक हो जाते हैं। एनीमिया का एक कारण जो है क्या कहते हैं, ये हमारा पीरियड्स होता है, बट ऐसा नहीं है। पीरियड्स में तो हमारे जो खराब ब्लड होते हैं वो बाहर निकलते हैं, और एनीमिक कोई नहीं होता है पीरियड से। दूसरी बात, बात यह है कि ये नॉलेज बड़े तो समझ जाएंगे, बड़े को समझने के लिए आप यूट्यूब पे चले जाइए, बुक्स चले जाइए, गूगल करिए, बहुत सारी चीजें। बट बच्चे के अंदर इसे हम कैसे ले जाएंगे, तो हम बच्चों को समझा सकते हैं कि देखो, जैसे हमारी आईज है, आईज से पानी निकलता है, जब भी कुछ तिनका जाता है हमारी आईज से पानी निकलता है, साफ हो जाता है। नोज, जब हमें जुकाम होता है नोज से तो लिक्विड निकलता है और क्लीन होता है। हमारे ईयर से वैक्स निकलते हैं। ठीक इसी तरह आपके बॉडी से जब हमारे यूट्रस में कुछ खराब ब्लड होते हैं, उसको बाहर निकालने के लिए ये मेंस्ट्रुएशन होता है, उसके लिए ये प्रोसेस है। तो जैसे हम आई को साफ रखते हैं, अपने साफ पानी से धुलते हैं, ठीक वैसे ही हमारा जो वेजाइनल पोर्शन है उसको भी साफ पानी से धुलना चाहिए। जैसे हम किसी केमिकल से बचाते हैं अपने आँख को, नाक को, कान को, ठीक है, अपने वेजाइनल पोर्शन को भी उसी तरह बचाना है। तो जब हम बच्चे को को रिलेट करके बताएंगे तो बच्चा उसको बड़े अच्छे से समझेगा और फिर वो उसको कोरिलेट कर पाएगा। धीरे धीरे इस चीज को लेके उसकी समझ विकसित हो जाएगी। जब इस चीज पे समझ विकसित हो गई, अभी वाइट डिस्चार्जेस होते हैं, बच्चे क्या करते हैं, किसी को बताते नहीं है, तो हमें उनको बताना है कि ये कोई खराब चीज नहीं है, ये अच्छा है। मतलब अगर आपको बॉडी को क्लीन करने के लिए ये प्रोसेस होता है। देन हम आते हैं कि न्यूट्रिशन पे आ गए, और फिर आप क्या यूज करते हो। आप जो भी पीरियड्स के समय कपड़े यूज, अगर आपके पास पैड नहीं है, आप कपड़े यूज कर रहे हो, तो कपड़े भी यूज कर रहे हो तो उसको सनलाइट में सुखाना चाहिए। गंदे कपड़े नहीं यूज करना चाहिए। अगर आप गंदे कपड़े यूज करोगे तो आपको वेजाइनल पोर्शन में ईचिंग हो सकती है, इन्फेक्शन हो सकता है। तो ये प्रॉपर एक वर्कशॉप की जरूरत है, मुझे ऐसा लगता है कि, और ये वर्कशॉप प्रॉपर स्कूल में होना चाहिए। मुझे तो लगता है कि ये एज अ सब्जेक्ट भी एक होना चाहिए कि जिसमें जो है हम अपने शारीरिक साक्षरता के बारे में बच्चों को बताएं, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो। फिर हम हाइजीन के बारे में बताएं। हाइजीन हुआ, अब हम उसको डिस्पोजल कैसे कर सकते हैं उसके बारे में बताएं, ताकि हम इन्वायरमेंट को कैसे बचा सकते हैं। अब ये टाइम तो बहुत है, वर्कशॉप में हमारे 5-6 स्टेप्स होते हैं जिसको हम करते हैं, और बच्चों के अंदर से जो हेजिटेशन है उसको हम कैसे दूर करें। और होता क्या है ना, बच्चे टीचर से भी नहीं बोलते हैं, तो आपको फ्रेंडली होना पड़ेगा, एक एम्पैथी रखनी होगी। आप ये सोचो कि बच्चों को कैसे बेहतर ढंग से उसको हम समझा सकें।
और सैनिटरी नैपकिन दे देना इम्पोर्टेंट नहीं है भाई। मैंने वही बोला कि अगर हम किसी को बुक प्रोवाइड कर देते हैं तो बुक प्रोवाइड कर दिया तो वो पढ़ लिया, नहीं, कैसे पढ़ना है उसको हमें ये बताना बहुत जरूरी है। जब हम इस चीज को बताएंगे, बच्चा प्रॉपर प्रैक्टिस में आ जाएगा तो वो अपने आप एजुकेट हो जाएगा। बस हम वही है कि हम बात नहीं करते हैं। जेंट्स हैं तो जेंट्स और लेडीज दोनों के लिए, टीचर्स के लिए खासकर एक प्रॉपर वर्कशॉप होनी चाहिए ताकि वो एजुकेट हो और उसके बाद वो स्कूलों में उस तरह की वर्कशॉप दें। ज्यादातर होता क्या है, एक बायोलॉजी सब्जेक्ट है उसमें थोड़ा बहुत टीचर बता देती है तो बता देती है, जो साइंस के स्टूडेंट है बायोलॉजी पढ़ते हैं उनको पता है, बट बाकी स्टूडेंट्स को पता नहीं होता है। तो मुझे लगता है सबसे इम्पोर्टेंट है कि टीचर्स को एजुकेट किया जाए। और बीच बीच में जो है बच्चों के जो पेरेंट्स होते हैं, जो रूरल एरिया के पेरेंट्स हैं, उनको भी बुला के उनकी भी वर्कशॉप करानी चाहिए ताकि जो मिथ है उनके दिमाग में कि पिकल खाने से क्रैम्स आते हैं पीरियड्स के टाइम पे, तो क्रैम्स क्यों आते हैं, तो कुछ लोग को लगता है कि ज्यादा पिकल्स खा लिया उस वजह से क्रैम्स आ रहा है या कुछ वैसा खाना खा लिया, बट ऐसा नहीं होता है। तो हम उनको एग्जाम्पल दे के समझा सकते हैं कि जैसे एक स्पंज है, आपने इंक में डाला, आप इसको स्क्वीज किया तो इंक बाहर निकल गई थी, ठीक इसी तरह जब हमारा यूट्रस जो स्क्वीज होता है तो ब्लड बाहर निकलता है और तभी हमें जो है पेन होता है। अब अगर हमें पेन होता है, बहुत से बच्चों को होता है, बहुत लोगों को बहुत ज्यादा होता है, तो पेन होता है तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? पहली बात तो कुछ लड़कियां तुरंत दवाई ले लेती हैं, हमें दवाई नहीं खाना है, हमें योगा करना है। योगा के द्वारा हम कैसे इसको दूर कर सकते हैं? तो हम हल्की फुल्की एक्सरसाइज करें, अच्छा हेल्दी फूड लें, तो इतना ज्यादा हमें पेन नहीं होगा और हम इसको अच्छे से कैरी कर ले जाएंगे। और दूसरी बात, पीरियड्स, खुद पहले तो अपना ही एग्जाम्पल दे कि भाई देखो हमें भी पीरियड्स आता है, तो धीरे धीरे सारे बच्चे बताए सभी को पीरियड्स है, ये आम चीज है, कोई आपके साथ स्पेशल नहीं हो रहा। क्योंकि स्टार्टिंग में जो बच्चे को पीरियड्स आता है वो बच्चा बहुत परेशान होता है, घबराया होता है, उसके दिमाग में बहुत सारे थॉट्स आते हैं और वो डर के मारे किसी को कुछ बता भी नहीं पाता है। तो ये सारी चीजें अगर हम उसके पीरियड्स आने के पहले से ही उसको समझाना शुरू करें तो शायद वो अपने बॉडी को बहुत अच्छी तरह से कैरी कर सके। मुझे इतना ही बोलना था क्योंकि टाइम 5 मिनट का ही मिला हुआ है। दैट्स ऑल। और इसके बाद मैं जो इस प्रोग्राम के ऑर्गेनाइजर हैं उनको मैं थैंक यू बोलना चाहूंगी क्योंकि इस टॉपिक पे पहल करना ही बहुत बड़ी चीज है। हेलो हेलो हेलो। Yes, ma'am. Ma'am, you are audible now. हेलो। Yes, ma'am. मेरी आवाज आ रही है? Yes, ma'am. Hello, ma'am. Okay, I think network issues. But thank you so much, ma'am. आपने बहुत ही अच्छी अच्छी बातें हम लोग के साथ में शेयर करी। इन चीजों के बारे में बात नहीं होती है, यही सबसे बुरी बात है। बट थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग दिस मीटिंग। एंड इस मीटिंग का लिंक, ये हम लोग लाइव स्ट्रीम कर रहे हैं यूट्यूब पे। इस मीटिंग का लिंक मैं आपको ग्रुप पे शेयर कर दूंगी, आप सब लोग चेक कर सकते हैं वो जाकर। And now I would like to end this meeting. Thank you so much, everyone. It has been such an honor to be a part of this wonderful event. On behalf of Sarkari School, I would like to extend my heartfelt gratitude to our esteemed guest speakers, respected all the teachers, my dear friends,
And sincere thanks to our organizing team who handled the event throughout. Thank you so much, everyone, for participating and making this event a memorable one. Thank you so much. थैंक यू अर्पिता, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छी मीटिंग आपने ऑर्गेनाइज की है, बहुत अच्छे टॉपिक पे आप लोगों ने बात की है, और इसी तरह से आप इस पे आगे बातें करते रहिए। जब चर्चा होगी तो बातें आगे तक जाएंगी और शायद हम जो मिथ्स एंड जो टैबूज है वो सोसाइटी के खत्म कर पाएंगे। थैंक यू सो मच। Yes, ma'am. Thanks to you too. वेलकम। Okay.